अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट में उनके एम्प्लॉइज से बात कर रहे थे, एंड वील शो यू द वीडियो एज वेल, and I think Naeem Saab will cover all of that issues. It is just unbelievable what's happening in our country, and we don't like it, but we are not doing anything about it. So I think the issue comes down to the fact that what can we all do now? I think when we walk away from this meeting, all of you have a responsibility to do whatever you can within your circle of influence. Yeah, either spread the word or be part of it, and hopefully we can bring some positive changes. चलिए 5:05 तो हो गए, so let me get started. अस्सलाम वालेकुम everyone. नईम साहब को I don't know कौन नहीं जानता. He's been very active, I'm sure. He is known by all of us. He's a one-man activist, social activist in his own right, and over the years has been quietly fighting the good fight against various kinds of social injustices in Pakistan, and very successfully too. That's important. A lot of people try, but they don't get the results. He took the matter of inadequate wages of public janitors and sanitary workers within the cantonment board areas to the Sindh High Court, obtaining a direction from the court ordering all cantonment boards across Pakistan to pay at least their minimum wage, which was 25,000 rupees. They were paying, some were paying 12,000, 15,000, literally, and they were chutti bhi nahi de dete. He has also done substantial work for children's rights and has actively spoken out against child labor practices. So these are just few of the examples. I will pass it on to Naeem Saab. Naeem Saab, welcome. Thank you for taking the time out. So the floor is yours. I'm going to mute myself now. We'll take the question answer at the end. थैंक यू साद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक ऐसे मजमून पे बात करने को कहा है जिसकी बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की अहमियतें हैं। एक तो बात यूं है कि ये उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान के तकरीबन 1 मिलियन लोग हैं जो कि पाकिस्तान को रोजाना साफ करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में 226 मिलियन और हैं जो कि पाकिस्तान को रोज गंदा करते हैं। तो ये एक रिमार्केबल ग्रुप है लोगों का, जो कि जिनको मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इस लिहाज से नोबलेस्ट और फाइनेस्ट लोग हैं। ये आज की डिस्कशन इस बात से भी के लिए भी अहम है कि उसके बरक्स ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, अंडरपेड लोग हैं, मिसट्रीटेड हैं और डिस्क्रिमिनेटेड हैं, और इनकी कोई आवाज नहीं है क्योंकि ये गरीब हैं, बहुत से पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, और अक्सर इनकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसी रखी जाती हैं कि इनको दूसरे दिन फारिग किया जा सकता है जरा भी बात कहने पर। तो देयरफॉर ये बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस लोग हैं, और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इस मजमून को उठाया। ये आपके कॉन्शियंस की रिफ्लेक्शन है। ये कौन लोग हैं हमें समझना चाहिए एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे होते हैं, एक ऑलमोस्ट ग्लोबल डिस्कशन कर रहे होते हैं, मगर जो चीज या जो मसाइल हमारे बिल्कुल सामने हैं, जिसके बारे में शायद हम कुछ कर भी सकते हैं, हम उनको इग्नोर रखते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि हम हर रोज अपनी स्ट्रीट्स पर काम करते हुए देखते हैं। हम जहां भी रहते हों, चाहे हम क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में रहते हों या हम शेखुपुरा म्यूनिसिपल कमेटी में रहते हों या हम कुनड़ी में रहते हों, मगर हमें ये लोग तो सड़कों पे पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तान की म्यूनिसिपल कमेटीज में होती है, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी का मकसद हयात ही एक बहुत बड़ा अपने शहर की सफाई करने को है। Can you all see me clearly? Yes, sir. Okay, thank you. Very clear. Thank you. Thank you. So the largest majority of them is found at municipal committees. Then they are also found in every government hospital, every government organization, every government university, every government
airport, every government national savings center, every government post office. The list is endless. In Sui Southern Gas, in Sui Northern Pipeline, and so on. Every government department has no option but to get itself clean every day. And here are these people who are available for doing that. So, and of course, every cantonment, जहां ये लोग पाए जाते हैं. जब ये काम वहां पे करते हैं, तो हमने कुछ तरीके ढूंढ लिए हैं, how to cheat them, how to deceive them, how to defraud them. We have found some suitable ways of doing that. हमने जो सबसे बड़ा काम किया है वो यूं है कि हालांकि ये तो रोजमर्रा हमें चाहिए होते हैं, ये तो हर रोज की रिक्वायरमेंट होती है, because we make a mess every day, so we have to have clean up activity every day. But we sublet this activity, this vital activity, जिसको essential service भी कहा जाता है. By the way, this is an essential service. So we sublet this to third party contractors. जब हम उनको थर्ड पार्टी को दे देते हैं, तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर इनको बहुत कम सैलरी देते हैं और बहुत सी उस सैलरी का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं. Sometimes you may be surprised that the portion of salary that is retained by one or more than one contractor many times exceeds the salary given to the janitor or the sanitary worker. Let me explain this to you by showing you a video whom for the sake of simplicity, I'm calling video A. Can we please play that? ज़हूर साहब आप प्लीज प्ले कर देंगे वीडियो ए. This video was shot only 2 days back on 17th of September. जी जरूर साहब कर रहे हैं. So this is absolutely latest. और ये isolated नहीं है, इसके बाद हमने 3-4 और interviews किए and they were absolutely identical to this. सरकार की मदद हम सबकी पानी से हाँ जरूर प्लीज कुछ बोल ही देना आप उसमें कि मैं कर रहा हूँ शो जी. वो I कर am रहे हैं. I am हाँ, sharing. बिल्कुल बिल्कुल मेंशन समथिंग. आप बिल्कुल क्वाइट हो गए थे. साउंड ऊंचा करें. जहूर साउंड ऊंचा करें. अभी तो साउंड है नहीं है. हाँ अरे म्यूट किया हुआ है उन्होंने. एक सेकंड पॉज करें जहूर. वॉल्यूम ऊपर करें. मैं फिर से आपसे पूछूंगा, आपकी तनख्वाह कितनी? 15,000 महीने की. ये किस हिसाब से बनती है? 500 रुपए दिहाड़ी. इसमें इतवार की छुट्टी आपको मिलती है या नहीं मिलती? मेडिकल लीव मिलती है या नहीं मिलती है? नहीं मिलती है. अच्छा, आपका नाम क्या है? सुरेश. आपका नाम क्या है? वीरमा. और आपका नाम? प्रभु. आपकी उम्र कितनी है? 15 साल. फिर से बोलेंगे? 15 साल. तो आप जैसे और भी बच्चे यहाँ पे हैं, कितने बच्चे हैं जो कि? 3 बच्चे हैं. अच्छा, अभी आप लोग सिंध सॉलिड वेस्ट में काम करते हो और उसने ठेका दिया है ये चीनी कंपनी को, और चीनी कंपनी ने फिर ठेका दिया है कोई पाकिस्तानी ठेकेदार को. तो आपके ठेकेदार का नाम क्या है? नूर भाई. अच्छा, तो अगर ये दरमियान में सारे लोग ना हो तो आपकी तनख्वाह बेहतर हो सकती है. ठीक है, क्योंकि सरकारी तनख्वाह तो 15,000 नहीं है. सरकारी तनख्वाह तो 25,000 है. 8 घंटे काम करने की रोज, वो भी जी, और उसमें भी 4 छुट्टियां शामिल होनी चाहिए. अच्छा भाई प्रभु, तुम स्कूल नहीं गए कभी? नहीं. अच्छा,
चलिए आपका बहुत शुक्रिया प्रभु वीरम सुरेश कि आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी बात को बताया कि आपको 500 दिहाड़ी मिलती है तो वो बनती है 26 दिन की बनती है 13,000 और 30 दिन की बनती है 15,000। 10 दिन रोकते हैं, 40 दिन के बाद महीने की पगार देते हैं। 10 दिन रोकते हैं, 10 दिन रोक के देते हैं। ये तो और भी जुल्म है ना, ये तो खामखा का जुल्म है। हमारे 10 दिन हम काम करते हैं और 10 दिन रख देते हैं। अच्छा 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 हम चले जाएं, हमारा हिसाब अच्छा अच्छा, करें, एक 10 दिनों की पगार नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, ये एक लिहाज से सिक्योरिटी रखी हुई है उन्होंने आपकी। हाँ, उन्होंने आपका सिस्टम बनाया हुआ। तो बेकार है। तनख्वाह हाथ में देते हैं, कैश देते हैं या बैंक में देते हैं? कैश देते हैं, कैश हाथ में। उसमें से 15 में से मजीद तो फिर काटते नहीं है? नहीं, 15,000 है तो फिर बस यहाँ हमारी दिहाड़ी को अवर कर देते हैं। अच्छा चलो, मेहरबानी बहुत प्रभु, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Yes, sir. Please continue. अच्छा, शुक्रिया। सो अब इस स्क्रीन को आप बेशक हटा दीजिएगा। गुड। आपने नोट किया कि इन तीनों के नाम क्या थे? क्या आपको कोई ग्रैंड डिस्क्रिमिनेशन की स्कीम इसमें नजर आती है? बाय द वे, ये सिर्फ 3 नहीं थे, हमने इसके बाद दर्जनों औरों को किया और वो ये सब आइडेंटिकल थे और उनके नाम भी। तो ये क्या बात है कि हमारे मुल्क में, जिसके सब लोग दिन में कई दफा कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर उनमें से तो कोई आदमी पाकिस्तान की सफाई नहीं करता है। हमने ये सबसे जो एक लिहाज से डिफिकल्ट, डेंजरस, हैज़ार्डस, डिमीनिंग जॉब जो है, तो हमने सबलेट किया है नॉन मुस्लिम्स को। ये एक ट्रिक है जो हम करते हैं और हुकूमत की अक्सर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं कि हुकूमत के इदारे को सैनिटेशन वर्कर्स चाहिए, उसमें उसके आगे लिखा होता है फॉर नॉन मुस्लिम्स ओनली। जिससे मालूम आपको होना चाहिए कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा एक वन ऑफ आवर मेन इश्यूज है जो कि हम इसके ऊपर हम फाइट करते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 3 सैनिटेशन वर्कर्स आपने देखे, ये ना सिंध गवर्नमेंट के हैं, ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, ना चाइनीज कंपनी के हैं, बल्कि एक और छोटे कॉन्ट्रैक्टर जिसका उसने नाम भी बताया उसके हैं। क्योंकि जो पेरेंट ठेका था वो सबलेट होता चला गया और ये जो है ये फोर्थ इन द लाइन ऑफ दैट डिसीटफुल सब कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग पाए जाते हैं। और आपको शायद सुन के थोड़ा अफसोस भी होगा कि ये सारी कहानी जो चल रही है, ये एक $100 बिलियन का यूनाइटेड का वर्ल्ड बैंक का लोन सिंध गवर्नमेंट ने लिया ताकि पाकिस्तान या कराची और सिंध में सफाई की जा सके। आप हैरान होंगे कि हमें सफाई के लिए लोन क्यों चाहिए, ये तो कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। पर चलो, अगर लिया तो लेने के बाद सबसे पहले वो लोन जो था वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना के एक चाइनीज कंपनी को दे दिया, विद द रिजल्ट दैट द एंटायर मनी ईदर वेंट टू द चाइनीज कंपनी और वेंट अंडर द टेबल। Now, why should a Chinese company be asked to clean up the streets? आपने इनके हाथ में कौन सा फैंसी इक्विपमेंट देखा? They only had brooms, and 100% sanitary workers, they only have brooms in their hand. But that's what we do, and we knew how to use the brooms since 5,000 years. But we used the Chinese company who subcontracted, and then these people come in. This is how we cheat. Our estimate is that the original Chinese company gets an amount equivalent to 80,000 rupees, while these people get an amount of something like 13,000 rupees per month. मैं इसलिए 13 कह रहा हूँ कि वो जो 15,000 कह रहे हैं वो तो 4 छुट्टियां भी मिला के, छुट्टियों पे किसी को हर महीने काम कराना, वो तो बाय इटसेल्फ एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो एक गलत बात है। तो दूसरी बात आप नोट करेंगे कि हमने इंश्योर किया कि इन लोगों की कोई पेंशन नहीं है,
अगर ये बीमार हो जाएंगे तो इनकी उस दिन की छुट्टी काटी जाएगी। इनका कोई EOBI का स्कीम नहीं है। ये एक्चुअली हर रोज के नए मुलाजिम हैं जिनकी मुलाजमत सुबह शुरू होती है और शाम को वो खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी डिसेप्शन है। आपको मालूम है कि हर शख्स जो 15, 20 या 30 साल कहीं काम करता है, उसके बाद उसकी कुछ ना कुछ पेंशन का निजाम होता है। मगर ये लोग, अब हम इनमें से बहुत लोगों को जानते हैं जिन्होंने 20 साल, 15 साल, 25 साल काम किया है, और जब वो रिटायर होंगे या जब वो एक उम्र के हिस्से को क्रॉस कर लेंगे तो उनको 0 रुपीस पेंशन मिलेगी। ये बात हमें क्यों नहीं मालूम या हमें क्यों एक्सेप्टेबल है, ये सवाल हम अपने आप से पूछना चाहते हैं। मैं जहूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो भी दिखाएं ताकि मैं इस तल्ख हकीकत का एक दूसरा पहलू आपके सामने रख सकूं। ओके सर। नाम है आपका? मेरा नाम सलीम हमीद है। कहाँ रहते हैं? मैं कुंडली शहर। 1 मिनट सर, कोई प्राइवेसी इशू हो रहा है, मैं अभी करता हूँ। जरूर वॉल्यूम भी जरा ऊपर कर दीजिएगा, give me a minute. आप आधे पे है। आवाज नहीं। कॉन्टैक्ट है। नाम है आपका? मेरा नाम सलीम हमीद है। कहाँ रहते हैं? मैं कुंडली शहर में रहता हूँ। कहाँ काम करते हैं? मैं कुंडली टोल कमेटी में काम करता हूँ। रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है? मैं डेली विजिट में हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी 15,000 है। और कब से काम कर रहे हैं आप? मैं 2005 से काम कर रहा हूँ। आपको सैलरी बैंक में मिल रही है या हैंड कैश? हमें सैलरी हमारा इंस्पेक्टर जावेद देता है। बैंक में नहीं देते हैं? जी नहीं। प्रताप बेटा मुझे ये बताएं। अच्छा बस, शुक्रिया। जहूर साहब फिलहाल इसको जी बंद कर दीजिएगा। मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि ये इंटरव्यू 2 रोज पहले का है। हमारे एक दोस्त ने वहां पे इन साहब को इंटरव्यू किया। कुनड़ी म्यूनिसिपल कमेटी, कुनड़ी एक बहुत छोटा जैसा टाउन है सिंध का, उसकी म्यूनिसिपल कमेटी में ये काम करते हैं। क्या आपने नोट किया कि ये साहब पिछले 17 साल से वहां काम कर रहे हैं डेली वेज के ऊपर। He is entitled to 0 pension, 0 benefit, 0 medical. This is slavery as intense and severe as what took place in the United States more than 200 years ago with people who were captured from Africa. ये लोग भी जो हैं ये कैप्चर्ड ऑडियंस है। इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये अभी भी इनको निकाला जाए तो ये रोते हैं, इनकी शिकायत करते हैं कि हमें वापस लिया जाए। CDA जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा इदारा है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल का एक वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1.5 महीना पहले 400 सैनिटरी वर्कर्स को निकाल दिया। जो भी उनकी रीजन थी, और उनको निकालना इसलिए आसान है कि भले उन्होंने 20 साल काम किया हो मगर वो डेली वेजर स्टेटस था उनका। जब उनको निकाल दिया तो वो सब लोग अब उन दफातर के सामने जाके बैठे हुए हैं कि हमें वापस ले लिया जाए, क्योंकि हम दुनिया में और कोई काम नहीं कर सकते। ये है मजबूरी जिसकी वजह से ये लोग एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तीसरी एक्सप्लॉइटेशन जो हम इनके साथ करते हैं वो है हम इनको गटर्स में भेजते हैं। जब मैं गटर का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो इससे मुराद रॉ सीवेज मैनहोल्स होते हैं, जिनकी अक्सर जो गहराई है वो 7-8 फुट या बाज़ दफा इससे भी ज्यादा गहरे होते हैं। इनको वहां भेजा जाता है विद जीरो
safety precautions. I am not exaggerating. और ये हमने अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा ये 2 दिन पुरानी है. So this is absolutely latest. और हमारे पास इस किस्म की वीडियोस पूरे पाकिस्तान की हैं, यानी कि ये कोई एक जगह नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है. और उस बंदे ने जो सेफ्टी प्रिकॉशंस पहने हुए हैं वो अपने सर पे प्लास्टिक का जो शॉपिंग बैग शॉपर जो होता है वो बांधा हुआ है. वो ना भी बांधता तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ना था, मगर उसको अपने बालों का ख्याल था, तो उसने that is the singular safety precaution that he is taking. तो जिसकी वजह से इनकी अक्सर वफात हो जाती है, और जब इनकी वफात होती है तो हम पूरा मुल्क उस पे खामोश रहता है. और मैं आपसे ये जिक्र करूं कि जिन एरियाज में आप लोग रहते हैं उस एरिया में भी 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जून की 15 तारीख को 15th of June, we lost 2 sanitary workers inside a gutter on Khayabane Shujat, on the intersection of Shujat and Sair. This came as a newspaper cutting in a very small corner, and it never appeared after that. पूरी दुनिया में अगर ये बात हो जाती तो इस पे कुछ इंक्वायरीज होनी थी कि ये कौन लोग थे, किस इदारे के थे, कैसे मर गए. हर मर्द तो वो कैसे गए वो तो शायद मालूम है हमें, क्योंकि वो इट वाज फुल ऑफ गटर एंड poisonous gas and sewage and poisonous gases. So one entered and died, the other went to pick him up and died, and anybody else, and nobody would now go in, and therefore their children had to be brought from their homes to take the bodies out. This is Islamic Republic of Pakistan and its modern management and bureaucracy. This is how we run our system. And that's what our campaign is about. चलिए, मैं आपको just to draw home the immensity of this cruelty, may I request Zahur Saab kindly show the 3rd video. Thank you. प्रताप बेटा मुझे ये बताएं कि ये एक जो गटर है ये कितने फीट का है? 6-7 फीट का है. तो ये कितनी देर में आप साफ करोगे? आधा घंटा लगेगा. चलो आधा घंटा लगेगा तो कोई सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, कोई वो सेफ्टी सामान नहीं है. चले देखते हैं कैसे करते हैं आप. ये बाल्टी इन्होंने अंदर डाली है. अभी ये अपने हाथों से वो जो कप है जो बंद कचरा है वो देखिए ये निकालना शुरू किया है. और अगर ये पानी फुल होता तो शायद ये डुबकी लगाकर नीचे जाता और बाल्टी भर के लेके आता. बेटा आपकी दिहाड़ी कितनी है? 1100. आपकी भी 1100. तो ये देखे ये फिर निकाला इन्होंने. इसमें इंजेक्शन हो सकते हैं, इसमें सिरिंजें हो सकती हैं, इसमें 5 हो सकता है, लेकिन कोई परवाह नहीं. अपनी जान को खतरे में डालकर ये मेन होल में उतरा हुआ है. तो ये इनकी पोजीशन है, ये सूरत हाल है. जबकि गवर्नमेंट ने वादा किया है, अदारे ने वादा किया है कि इन्हें सेफ्टी का जो सामान है वो मुहैया किया जाएगा, हर चीज मुहैया की जाएगी. लेकिन ये देखें ये आपके सामने है, कोई किसी किस्म की चीज नहीं है. अच्छा जी, शुक्रिया. Now this gives you some idea कि ये जो वीडियो आपने देखी ये बिल्कुल कोई खास वीडियो नहीं है. ये बिल्कुल आम वीडियो है जो कि एज ऑफ राइट नाउ जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो शायद पाकिस्तान में 500 गटर्स में इस वक्त ये काम ऐसे हो रहा है और हर रोज होता है और हर कुछ रोज के बाद वफात हो जाती है, जिसको हम अंडर द कारपेट कर देते हैं क्योंकि इन लोगों को इनका कोई मकाम नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है. तो और ये हमारे लिए डिस्पोजेबल लोग हैं. That is the reason we who are the most blessed citizens of this country, we need to stand up for them. Okay, I move next. Well, before I move next, now there is a sentiment
there is a group of people who want to insist that nobody should go into a gutter, into a sewage gutter ever again. But that's only possible if we can design mechanical means where the suction takes place from outside completely, and then there are machines which can go and ram the solid waste which is struck and clear the pipe, or there are mechanical buckets. अभी तो आपने देखा होगा कि एक बकेट को उसके अंदर डाला जाता है, जिस उस जगह पे जहां पे वो खुद बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, पानी के अंदर उसका पांव फिसले तो वो वैसे भी पाइप में चला जाएगा, और फिर वो भरता है उसको और फिर उसको ऊपर उठाता है। इस जिस गटर की आपने तस्वीर देखी, ये तकरीबन हाफ फिल्ड था सीवेज के साथ। ये फुल फिल्ड भी हो सकता था और उसको भी ये इसी तरीके से हैंडल करते हैं। तो हमें तलाश है उन एक्सेप्शनल पाकिस्तानीज की जो ये काम करें, जो कि एक प्रोटोटाइप मशीनरी डिजाइन करें और बनाएं अपने खर्चे पे, और उसको फिर पाकिस्तान में प्रमोट करें और बोलें कि ये काम है करने, इस तरीके से दुनिया ये काम करती है और आप भी करें, ताकि हम ये सारा जो फसाड है कि XYZ सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल किया करें, उसमें से निकल जाएं। ये जो सेफ्टी का काम है, ये इस इशू में बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें 15-20 चीजें पहले करनी होती हैं बिफोर यू कैन अलाउ अ पर्सन इनटू दैट, और वो पाकिस्तान में हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आई मूव नेक्स्ट एंड वी से कि which I want to say rather briefly as to what do we do to create reforms in this area and to defend the rights of these people, our co-citizens, our brother citizens. Typically, we follow an approach which is in management terms called PDCA approach. I call it more simply research, writing, and advocacy. The research is necessary because if you don't know what is the situation, there's nothing else that you can do. Whatever you are going to say, it will be meaningless and it will not have the force of conviction in it. So we need to know the facts. मैं जहां रहता हूं वहां कौन है सैनिटरी वर्कर्स, किस डिपार्टमेंट के हैं, किस म्युनिसिपल कमेटी के हैं, कितने हैं, उनकी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या वो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग आदमी हैं या डेली वेजर्स हैं, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। उनकी तनख्वाह क्या है, उनके सुपरवाइजर या उनके कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, ये रिसर्च हमें करना लाजमी है। इसी तरह जो गटर्स में जो जाते हैं उनकी हमें तस्वीर लेना या वीडियो बनाना लाजमी है, क्योंकि एक अजीब प्रॉब्लम यूं है कि हम जब भी इस महकमे के पास जाते हैं और जाके उनसे ये कहते हैं कि ये देखें आपके लोग ये काम करते हैं, ऐसे आप लोग ऐसे काम कराते हो, आप तो कभी गटर में नहीं गए हो ना, आप इनसे क्यों ये कहते हो कि ये जाएं? तो वो कहते हैं नहीं जी, हम तो नहीं कहते, हमने तो मॉडर्न मशीन्स खरीदी हुई हैं। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि हर गटर में जो है लोग जाते हैं और मशीन्स जरूर हैं कई जगहों पे, वो कुछ सरफेशियल काम पहला स्टेप करती हैं, वो ये काम करती हैं कि सक्शन कर लेती हैं, किसी हद तक पानी को निकाल लेती हैं बाहर। उसके बाद बाकी जो स्टेप्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो कि अभी आपने देखे। तो हमको ये बात प्रूव करनी होती है पाकिस्तान के मैनेजर्स के साथ, इन महकमों के मैनेजर्स के साथ, चाहे वो अस्पताल हो या म्युनिसिपल कमेटीज हो या कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, कि आप असल में ये करते हो और झूठ मत बोलिए। दिस इज हाउ यू मेक दिस पीपल वर्क। So much so that now there is a parallel industry of private guttermen or sewermen. Only in DHA there are 6 places where 4 to 5 people are sitting with those long bamboo things with them. They are available, आप उनको बुलाइए और वो आएंगे और ये काम आपके लिए करके चले जाएंगे।
ये एक बहुत खराब किस्म की बात चल रही है और ये सबको मालूम है। अगर ये मुझे मालूम है तो फिर जो इस जगह को मैनेज करते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो सड़कों पे बैठे होते हैं और आप इनको फोन करके या वहां से रुक के इनको बुला सकते हैं। आप इनको 2-3 हज़ार रुपए दे दें और ये आपके गटर के लिए अंदर घुस जाएंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे। यही काम 15 जून को भी किया गया, जिसमें 2 आदमी मारे गए। तो first step is, please do research, take pictures, make videos of these things happening, question, interview, and find out what are their wages. Almost no janitor in Pakistan has EOBI and SESI, but nevertheless ask them this question. When do they get their payment? Once you find that information, you are in a very powerful position. You can now write on that. You can write in the newspapers, you can write a letter to editor, you can write an op-ed, you can write to the government department and say, Mr. Managing Director, this is what is happening in your organization. Can you please do the necessary mitigation, make them give the legal wages. By the way, legal wage in Pakistan as of today for 8-hour duty is 25,000. For 12-hour duty, it is 50,000 because the other 4 hours fetch you twice the wage. That's the universal law. So do the research and write. In that process, you can spread the word on social media as well, because other people can get motivated and inspired. Write to the concerned departments. Then use powerful tools. If it doesn't work out, then use right to information. You can write to an organization under right to information and demand this and this information be provided to me. They are bound to give it to you in 10 working days. If they don't give, you can go to chief information commissioners. That's a very powerful tool. Please use that. The other things that you could use is you could go to ombudsman. We have gone numerous times to ombudsman. हालांकि होता यूं है कि जब भी हम किसी और इदारे के पास जाते हैं, मसलन ombudsman के पास, मसलन ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, तो ये लोग वहां जाके झूठ बोल देते हैं कि नहीं जी हम तो ठीक तनख्वाह देते हैं, नहीं जी हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको तनख्वाह देता है, हम तो नहीं देते. Not knowing that the responsibility for the correct legal wage does not lie with the contractor, it lies with the principal employer. ये बात सिंध हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने repeatedly confirm किया हुआ है कि the responsibility for a regular job is contracted, the legal obligations must be met by the principal employer. So if you give a contract out to somebody, you need to make sure that the worker is getting the latest minimum wage and the other legal requirements are being fulfilled. At the end of the day, there is one more option, and that is litigation. You can make an appeal to High Court. जैसे साद ने बताया कि हम गए थे सिंध हाई कोर्ट में, हमें 1.5-2 साल लगे. हमारे साथ फैसल सिद्दीकी थे जो बहुत ही अच्छे लॉयर हैं और उन्होंने प्रो बोनो ये काम किया और वो केस जीत गए. और इन लोगों को फिर इनको वो कॉन्ट्रैक्टर्स को फायर करने पड़े, और क्योंकि दे आल्सो रियलाइज दैट द मनी इन बिटवीन इज बीइंग मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड दे हैड टू give them direct daily wage contracts. Now, this is again bad. They are giving them the right wage, 25K, but it's on a daily wage, which is bad, which means they will not get EOBI or CC. This also means they have no letter of appointment, which is terrible, because when these chaps are thrown out after 10-15 years, and if they don't have a letter of appointment, they have no place to go to. तो ये काम आप कर सकते हैं. Currently, we are doing a similar case against Sindh Solid Waste Management and against municipal corporations of the entire Sindh province. And our lawyer is Sara Balkani.
a brilliant lawyer with her heart at the right place, and she is doing this case pro bono. The next hearing is on 10th of October. What can you do? I will try to now come to a closure of this subject. You might have terribly gotten bored of this whole discussion, but I think if nothing else, you must know this, exactly how Pakistan is run. And if it is run so poorly at this bottom level, then how it would be run at other places. What can you do? First point is, are you serious? Do you believe that a change will come? The problem with most Pakistanis today is that they have become sarcastic. They have become, they really do not think that a change will come. तो अगर आप समझते हैं कि एक चेंज लाई जा सकती है, जो कि हम समझते हैं कि एक चेंज लाई जा सकती है, तो हम इसको फिर परस्यू करें फुल्ली। और उसका आप याद रखें कि दुनिया में जो बहुत बड़ी चेंजेस हुई हैं, उनको भी लोग समझते थे किसी स्टेज के ऊपर कि वो नहीं होंगी। द स्लेवरी मूवमेंट इटसेल्फ एट वन टाइम वाज कंसीडर्ड कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम तो स्लेव्स हैं, तो अब हम कैसे इक्वल हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। मगर अब हो गए ना, अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं वहां से आए हुए लोग। तो पाकिस्तान में भी ये चेंज हो सकती है। तो इसका तरीका ये होगा कि आप फॉलो करें द सेम पाथ, रिसर्च, अपने एरियाज में आइडेंटिफाई करें who are the sanitation workers, how many, where do they work, what is their employment level or type, what is their wage, who do they report to, when do they get their money, how do they get their money, because many times the contractor physically takes away a part of his money. अच्छा भाई मुझे देने दो, मैंने 15 ही मैंने देने हैं, मगर 1000 मैं रख लूंगा अपने पास या 10 दिन के बाद दूंगा। How come almost no sanitation worker in Pakistan is paid on first? And every manager in Pakistan and every government officer in Pakistan is paid on first of every month. कभी हमने ये सवाल पूछा है ये कैसे होता है और ये क्यों होता है? तो ये भी पूछने की बात है। तो आप जब ये आइडेंटिफाई करें तो काइंडली बिगिन राइटिंग एंड गो फॉर द एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट रूट। एक बात मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। Many of our friends have made a group called Justice for Sanitation Workers. ये ग्रुप हमने एक इनफॉर्मल नॉन हायरार्किकल ग्रुप रखा है which operates on WhatsApp. Those who are really keen can join this group. उसका फायदा ये है कि उस ग्रुप का बहुत सिंपल रूल है, we will not want to sound pessimistic. We will do whatever we can, and what we do, we will post on that group कि आज मैंने ये रिसर्च की, ये फाइंडिंग्स हैं इसकी, आज मैंने इस अखबार में लिखा, ये वो लेटर है, आज मैंने ये एडवोकेसी की, मैं हुकूमत के फलाने डिपार्टमेंट से मैंने मीटिंग की जाके, ये मैंने बातें की, ताकि हर दफा हर पोस्ट जो है वो एक नई इंफॉर्मेशन और नया रास्ता और नए एड्रेसेस और नए फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयर्स का पता दे, ताकि बाकी लोग फिर उसको लैच ऑन कर सकें और उसके पीछे जाके उन चीजों पर अपने अपने तरीके से अमल करें। तो हम किसी को एक अल्टीमेट गाइडेंस नहीं दे रहे, बल्कि हम उनको एक रास्ते दिखा रहे हैं हर रोज। और हम हर रोज, जैसे आज हमने पोस्ट किया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये हो रहा है, ये जो आपने भी वीडियो देखी है, तो जो उसमें से उस ग्रुप के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये महकमा है, इसमें इस तरीके से लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, इस तरीके से वेजेस दे रहे हैं, इन लोगों को एक्सेस किया जा सकता है सिंध गवर्नमेंट में कि ये चेंजेस वो लेके आए। So I would request you that if you are really serious, you are really keen, you believe a change is possible, which is possible,
then you may join this group called Justice for Sanitation Workers. There is no precondition except that you are willing to be a volunteer and you are willing to go for it. You are willing to support the movement of civil rights for the sanitation workers of Pakistan. You may just give your names to any one individual जो कि इस ग्रुप को आपके PILAP को मैनेज कर रहे हैं. मसला आमिना यूसुफ जई है, उनको अगर आप सब लोग अपने नाम दे दें तो वो मुझे पास ऑन कर देंगे, हम उनको उसमें डाल देंगे उस ग्रुप के अंदर, Justice for Sanitation Groups, and you go from there. Thank you very much. I would be maybe I have overstretched my time, I'm not sure. Have I? नहीं, not really. नहीं, हमने 1 घंटा रखा था इसके लिए. Now we are open to questions if anybody has any questions, because thank you so much first of all Naeem Saab for showing us how you operate, because a lot of us, you are right, are very sarcastic, कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, ये तो मुल्क डूब गया है, and those are the kind of people we need to stay away from and be part of the change. And any of you is interested in being part of that group, you mentioned, please send names to me or anybody from PILAP and we'll pass it on to Naeem Saab. So open to questions. So I don't have a question, but I have a comment. Personally, I'm also Mazhar Walji here. The way things are all around us, I'm also personally losing hope. But what Naeem Sadiq Saab just said, that you have to believe in that change. The analogy of the slavery movement really struck a chord. So let us also focus on how to spread this, because change will come when people believe. Let us also work on making people believe. Thank you. Thank you. Mother Saab, you are yourself an accomplished person. I know that. And you could be a great resource and help to spread the word. In today's world, there are numerous methods which people know very well as to how they spread the word. And social media is one thing. But I only give limited value to social media, because as you notice, most people are wanting to only explain which lounge of which airport they are traveling through right now, or when is their birthday, and they're not into serious issues. So nevertheless, क्योंकि वो एक मीडियम अवेलेबल है, हमें इन चीजों को वहां पोस्ट करना चाहिए, ताकि जो लोग जो कि सिनिकल नहीं हैं, सरकास्टिक नहीं हैं और पॉजिटिवली आगे जाना चाहते हैं, वो इसको ले सकें. इसके अलावा आपके और मेथड्स हैं, आपके व्हाट्सएप हैं, आपके दोस्त हैं, आप उन्हें कहें कि वो ज्वाइन करें. और मैंने एक आपको जो प्लेटफॉर्म बताया है, जस्टिस फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको लोग जो वॉलंटियर करके ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें उनको बहुत हर रोज कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी कि अब उनको क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं. मैं आपका मशकूर हूं, आपने ये पॉइंट रेज किया. Any other questions? जी, मैं इनाम रहमान है जी. नईम साहब, थैंक यू वेरी मच. मेरा सवाल ये है कि this advocacy that the other WhatsApp group, Justice for Sanitation Workers, the focus is very clearly on the employer, right? There is and the efforts are all on getting the employer to behave. There is no advocacy on training these sanitation workers about and maybe helping them with some equipment, etc. Thank you. शुक्रिया इनाम साहब. अगर तो कोई ट्रेनिंग या इक्विपमेंट मिलेगा उनको, ये तो पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड है, तो वो उनका महकमा ही कर सकता है. तो एक और बात यूं है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, that may not be a complete checklist of doing things. There may be numerous other things. In fact, we are constantly looking for numerous other things to be done. क्योंकि हमारी सिचुएशन जो है, we are Davids and we are facing a mountain called Goliath, and we have little tools in our hands, almost nail cutters, and we have to make a dent in that mountain to cause these changes. तो आपकी बात सही है कि हमें numerous other means भी continuously सोचने की जरूरत है और इस्तेमाल करने की जरूरत है.
और जैसे जैसे और लोग आएंगे, आई वुड इमेजिन कि वो अपने साथ नए आइडियाज, और वो हम तो बल्कि ये ओपन ग्रुप है, तो हम ये कहते हैं कि जो चीज आप कर सकते हैं, आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, वो आप करें। तो इस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। I think the only comment I have is what Naeem Saab has shown us that it can be done. Again, and he has done it. I think we need multiplier effect. Multiplier effect can only happen if we can take Naeem Saab and make photocopies of him and spread them all over Pakistan. And we can be the photocopies, to be very fair. And I think it's very inspiring. Thank you, Naeem Saab, for a very good. We are going to upload this on and we will probably do a campaign. मेरी आमना से बात हो गई है on this whole question. Sanitary worker पे भी हमने social media पे भी करेंगे. Hopefully, we will have a more discussion on this one. And let's see, this awareness जो बात कर ली. For example, somebody in this group is probably living in Barrier Town. Maybe they should go to Barrier Town and find out कि भाई क्या हो रहा है, आप Right. wages क्या कर रहे हैं आप, or somebody lives somewhere else. So everybody, that is where we can have more feet and more people with the same thing. And I think Mazhar साहब ने बहुत सही बात की है. I am a very positive person. That's one of my DNA. But believe me, in today's world, it is so difficult to feel positive because things that are happening after happening. But I'm still positive, and I will remain positive because that is how God has designed me. But so, if there are no more questions, I will bring. I think Manzar Saab, आपका question है? नहीं. मंजर साहब, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप. You can continue, then I'll follow my comments. Teleni, I'm done. I just wanted to thank you. Why don't you ask your question? While we have heard about these sanitary workers, लेकिन I'm well aware कि नईम सादिक साहब जो है ना, वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में भी जो है एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो भी एक बहुत ही exploited or underpaid community है, and maybe we can have one session for them also on a later date. बिल्कुल. मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने ये बात रेज की है, बहुत अच्छा किया आपने, और आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो भी एक हाईली एक्सप्लॉइटेड ग्रुप है जिसको मदद की जरूरत है. तो एनी टाइम योर ऑर्गेनाइजेशन इज हैप्पी टू डू दैट डिस्कशन, I would be very happy to join you. बिल्कुल नईम साहब, उसमें मैं एक छोटा सा आइडिया दूंगा. We all have security guards, ठीक है ना, नहीं है ऑफिस में है. We should all ask them this question कि तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है. अगर गलत मिलती है तो अपने एडमिन के पास जाएं कि जी इस सिक्योरिटी एजेंसी को बाहर निकालें आप. They are not paying properly. Let's start with that at least. Absolutely. हाँ, तो मगर मैं अगर बिल्कुल बोलिए साथ, अगर आपकी इजाजत हो तो जी, मैं एक बात छोटी सी कह दूं इसमें गार्ड्स के बारे में. वो यूं है कि किसी से पूछना कि इनकी क्या तनख्वाह है, वो कोई ना कोई तनख्वाह तो बता देगा, मगर हमें मालूम होना चाहिए कि उनकी क्या तनख्वाह होनी चाहिए कानून के मुताबिक. बिल्कुल. I think minimum is 25,000, right? In sense. जी, that is for 8-hour duty. और ये हमें किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि guards invariably do 12 hours duty, invariably. बिल्कुल. So therefore, every guard in Pakistan is authorized 50,000 rupees. ये हमें मालूम होना चाहिए, और ये कोई पाकिस्तान में किसी गार्ड को नहीं मिल रहे हैं. इस वक्त जो मैक्सिमम पे किसी को मिल भी रही है तो वो 25, और वो एक लिहाज से समझते हैं कि ये आसमान हमने इनके ऊपर खोल दिया है. ये यूं नहीं है, ये लॉ है पाकिस्तान का which says that you will get 25K for 8-hour duty plus 4 hours. अगर आप एक्स्ट्रा हर रोज करेंगे तो then you get another 25, और plus you get 4 days holidays. Not many people know in Pakistan that guards do not get 4 holidays in a month. चलिए, ये बातें हैं, मगर मैंने एक बेसिक बात बताने की सैलरी किया. True. Thank you so much. I think this is, to me, anybody who attended this session, who will read this session, will walk away with a lot more information and knowledge of what is happening around them and be probably more responsible. So thank you, Naeem Saab, for giving. Thank you. Thank you for all the CA member and non-members as well. Please, who are not members, please become member of PILAP. Write to us. We would love to have you, as part, because we are going to do this. I think 2 sessions probably a month. अभी हमारा plan next session का है, ombudsman के साथ करना चाह रहे हैं, where he will come himself
and hopefully explain what his role is and how you can use his services, because not many people know about that. Abhi aapne Naeem Saab ne bhi zikr kiya, he goes to the ombudsman many times. So that is another venue that we can use, but not people are aware of that. And we'll do more sessions in the future as well. So thank you, everyone. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. And For the office, and thank you. Khuda Hafiz.